Hi, this is Palak Gandhi. Today we'll be learning activity-based costing, that is chapter 4A of F5 subject, that is performance management. So basically, as the name suggests, activity-based costing, activity-wise cost will be calculating. What's the main difference between the normal cost which I've already calculated and activity-based costing? Let's learn. Few decades before, there were businesses where we used to have only material and labor and overheads also. But the proportion was only 80% of material and labor and 20% of overheads. And nowadays, what does business do is everything is shifted into services based, like services based in industries. Like there are three categories: primary, secondary, and tertiary. So previously, businesses were wholly and totally into primary and secondary. Nowadays, totally they've shifted into tertiary. So there's a paradigm shift from 20 to 80% of percentage to 20 to 80% of the other percentage. I repeat, previously it was 80% of material and labor. Now it is only 20% of material and labor and 80% of overheads. That means it is totally shift from material and labor to overheads. That clearly states that people have now started believing in services based industries. Secondly, previously businessmen used to believe only in entering only into one of the industries. Nowadays, there are n number of businesses people have started opening. Like for an example, we can say that a man who is already into a tire business, he has now been dealing into a tea business also, food business also. These are different industries he's been dealing with. This is what today is going on. For that, we need to calculate a per unit of each and every industry, right? Same thing if we wanted to apply the previous decades, what we used to do is businessmen used to deal only in industry. So if you compare a businessman who used to enter into tire business, he used to deal into tires, in tire accessories, into the rubber materials, so all dealing into tires. So it's very difficult for us to deal in ABC during those times, because ABC is benefit when you have diversification of business. When you don't have diversification of business, it is difficult also. So previously, absorption costing is more easier when you're dealing only in one industry. When you have diversification of business, it is purely recommended to go for ABC costing. Okay, so this is just a gist of ABC. Let us consider a portion. This is my old book, so it is showing 2A of the chapter. Starting with the first topic, activity-based costing. Here in the first paragraph, they have described about cost drivers. What are cost drivers and what are cost pools? Uh, just in a layman language, I would like to explain you. Cost pools are when you are collecting different cost from different business, as I explained you, that a man having business in food also, a man having business in a tire business also, that the cost collecting from different business
and having in one head is called as cost pool. Cost drivers are when you have a base, like what to take a base as an absorption costing. We used to have only two major bases, that is machinery, uh, machinery hour and direct labor hours. Here we have different businesses, so we have different bases. For example, it can be per machine hour also, it can be a labor hours also, it can be a material per unit also, it can be set up per unit also, it can be material handling per unit also. It depends upon business to business. So cost drivers are not, in simple words, cost drivers are base of what the business belongs to, and cost pools are the cost which we have collected from different business. What really we have to do is in ABC costing is we have to take out a individual cost of each business which you're dealing with, each activity which our business deals with, and with an appropriate cost driver. Cost driver are number of setups, number of machinery hours, number of direct labor hours. Here in the first paragraph they've explained us all about cost drivers. ABC involves the identification of factors which causes or drive the costs of an organization's major activities. Overheads are located and apportioned to activity cost centers or cost pools. Cost centers are what? Cost centers are such type of centers where costs are allocated, where costs are collected. And these collected costs are called as cost pools. From these activity cost centers, the overhead costs are then absorbed into the product cost on the basis of the usage of the activity. The absorption rate for each activity is the rate per unit of the relevant cost driver. For activity cost, that seems to relate the volume of production, the cost driver will be volume related. That is, I've already told you it's labor or machine hours. For activity costs that do not seem to relate to production volume, a different cost driver is identified. As I've already told you all about production runs, setup per unit. I said about different type of these cost drivers depends upon what type of business or whatever activity you're dealing with. That is basically the base which you have taken for the business. We go ahead. Reasons for development of ABC. Now, nowadays everything is digitalized. So, what basically this what is a motto of adopting these type of activities is mainly when advanced manufacturing technology had started. Now, what do you mean by advanced manufacturing technology? Advanced manufacturing technology all about digitalizing. It's nothing is manually done. It's everything. When you have to record everything, everything is done on the computers. Everything is digitalizing. It's not like when you have the books or pen written down. When you have to record the stocks manually, it's everything updated. So it's these four paragraphs are all about like how what are the reasons we had to develop ABC. The main reason was when we had to adopt, like when there was a paradigm shift from doing things manually to making it digitalizing, like how previously we used to record accounts in the books, manually pass the journal entries. Now it's everything done in Tally, SAP, or maybe there are n number of different softwares also. So it's just the same thing is adopted over here also. First, we used to deal in absorption costing or traditional costing. Absorption traditional costing is one and the same, just the name are different. So previously we used to have only two bases, like how direct labor hours or machinery has only two bases. One of them which is very convenient to use, or you can say very good to use on the basis we used to take that. Nowadays it's not possible because that won't give us a perfect result to our business. We'll see in the practical problems as it will show us the perfect result, that how much difference it will show between a traditional
and ABC costing. Okay, these 2 to 3 paragraphs, you can just read it once. It all deals about manufacturing, advanced manufacturing technology. I'll just read this 2 points, which is a little bit important. Traditional absorption costing system, which assumes that all products consume all support resources in proportion to production volume, tends to allocate. This is, I'm talking about traditional absorption costing. That is the absorption costing which already dealt with. To grade a proportion of overhead to high volume products which cause relatively high little diversity and hence use fewer support services, and too too small a proportion of overheads to low volume products which cause greater density greater diversity, sorry, and therefore use more support services. Here what are we trying to say is, this is a gist of what is the example given above. Let us first read the example given above and then discuss the points below. The wider range and the more complex the products, the more the support services are required. That means, as I told you, what do you mean by diversification? Diversification here means you're not dealing in only one industry or one business, you're dealing into n number of business and n number of industries. Consider example, factory X which produces 10,000 units of one product. जब भी एक प्रोडक्ट के लिए एक ही प्रोडक्ट 10,000 यूनिट्स का बनाया गया है, वो एक अल्फा है. Factory Y, which produces 1,000 units each of 10 slightly different versions of alpha. इधर फैक्ट्री जो Y है वो अल्फा के अलग अलग टाइप के डिफरेंट टाइप्स, यू कैन से नॉट वर्जन रिटन है, बट यहाँ पे सिंपल लैंग्वेज में कोट करेंगे उसको टाइप्स बोले गए हैं. मतलब एक इंडस्ट्री जो एक ही प्रोडक्ट 10,000 यूनिट्स बनाते हैं, वही अगर दूसरी इंडस्ट्री को हम कंपेयर करेंगे, बनाता है वो सिर्फ 1,000 यूनिट्स, बट इधर 1,000 यूनिट्स वो 10 अलग अलग प्रकार के अलग अलग जो प्रोडक्ट है उसमें बनाता है. दैट मीन्स 10 different types of alpha is made, where each alpha is produced 10,000 each. So it's so difficult to know just calculating into absorption costing and getting the answer, and calculation goes so wrong in the second one. How? I'll show you. Support activity cost in the factory Y is likely to be a lot higher than the factory X. Obviously, सबके अलग अलग versions है, सबके अलग अलग methods है, सबके अलग अलग bases है. How do we calculate everything together? Even though the factories produce an identical number of units, little bit identical, but थोड़े तो अलग रहेंगे ही ना, कुछ ना कुछ अलग रहेगा तो ही वो अलग, like it's that is what called slightly different. अगर सेम ही रहेंगे तो हम लोग सेम प्रोडक्ट में ही गिने जाएंगे उसको. For example, factory X will need to set up only a single production run. अगर एक ही प्रोडक्शन सेंटर खोलेंगे तो फैक्ट्री एक्स के 10,000 एक साथ यूनिट बन जाएगा. वही सेम थिंग अगर प्रोडक्ट आई मीन फैक्ट्री वाई की बात करेंगे तो उसको 10 अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाने हैं. एक प्रोडक्ट का वैसा 1,000 यूनिट्स बनाने हैं उसको, तो उसको वैसे 10 अलग अलग सेटअप बनाने पड़ेंगे. 10 अलग अलग मटेरियल हैंडलिंग के जो यूनिट्स है उसको गिनने पड़ेंगे. 10 अलग अलग प्रोडक्शन रन्स कितने होते हैं उसको देखना पड़ेगा, बिकॉज ऑल आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स. So don't you think what we have applied for factory X won't be applicable to Y? Why? Because factory X all deals with only one product and factory Y has n number of products. इसीलिए हम ABC costing यूज करते हैं, क्योंकि इसमें हमको ईच अलग अलग बिजनेस में हमको अलग अलग बेस ढूंढने पड़ते हैं जिसके अलग अलग कॉस्ट होते हैं. क्या करते हैं हम लोग प्रैक्टिकली, ये कॉस्ट को ये बेस के साथ डिवाइड करते हैं जिसका हमको एक पर यूनिट में आंसर मिलता है. दैट विल बी आवर ओवरहेड पर यूनिट कॉस्ट. ऑफ कोर्स प्रैक्टिकल में आपको दिखाऊंगी, जरा समझ में आएगा. दिस इज जस्ट लिटिल बिट थ्योरेटिकल नॉलेज व्हिच यू शुड नो. ठीक है. Whereas factory Y will have to set up production run at least 10 types for each of 10 different products, as I told you. Factory Y will therefore incur more setup cost for same volume of production. We read the 2 points. कि
ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में क्या अज्यूम करते हैं, टू ग्रेट अ प्रोपोर्शन ऑफ ओवरहेड्स टू हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट्स which cause relatively little density and hence fewer support services, and too small a proportion of overheads to low volume products which cause greater diversity and therefore use more service support services. These are, मतलब इसका मतलब क्या होता है सिंपल लैंग्वेज में, कि ज्यादा प्रोपोर्शन होता है ओवरहेड्स का या तो फिर बहुत ही कम प्रोपोर्शन होता है ओवरहेड्स का, ये दो चीजें होती तो कभी होती है। जब भी प्रोपोर्शन ज्यादा होता है ओवरहेड्स का, तभी अपने वॉल्यूम रहते हैं बहुत कम रहता है। आई रिपीट, जब भी कोई भी ओवरहेड्स का प्रोपोर्शन ज्यादा रहता है तो वॉल्यूम, आई एम सॉरी आई मेड अ मिस्टेक शायद, या when the proportion is more, the volume is also more of a product, and when the proportion is less, the volume is also less. This is how we have been assuming in traditional costing, but here the ABC costing overcomes this problem कि proportion ज्यादा है तो volume ज्यादा, ऐसा जरूरी नहीं। This is, we have overcome and developed all because of this activity called as activity based costing. Activity based costing is a method of costing which involves identifying the cost of the main support activities and factors that drive the cost of each activity. Support overheads are charged to the products by absorbing cost on the basis of products usage of the factory driving the overheads. Just a simple definition which shows us that हम लोग जितने भी cost है वो identify करके लेते हैं। और cost drivers का मतलब क्या होता है? Cost drivers are the basis, कितने कितने रन्स, कितने प्रोडक्शन रन्स है, कितने मशीनरी आज है, कितने मटेरियल्स है, कितने मटेरियल रन्स है, सॉरी कितने मटेरियल हैंडलिंग के कॉस्ट है पर यूनिट। पर यूनिट कॉस्ट हम लोग निकालेंगे, बट कितने हैंडलिंग ओवरऑल वो कॉस्ट पूल्स में आ जाएगा। ठीक है। The major idea behind activity-based costing as follows. Activities cost. Activities include ordering, material handling, machining, assembling, production schedule, and dispatching. So these are activities which are cost pools. ये जितने भी cost हमको अलग-अलग activities से मिलते हैं, हम लोग उसको इकट्ठा करते हैं, जो हम इसमें तो नहीं करते अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में। तो ये जो एक्टिविटीज है जो हर एक बिजनेस में अलग अलग होगी, तो हम अजम्पशन नहीं ले सकते ना एक बिजनेस का एक ही, लाइक ये जैसे हम लोग ने ऊपर का वो इंडस्ट्री का बिजनेस लिया एक्स एंड वाई, एक्स में तो एक ही प्रोडक्ट है, हम लोग वाई का ऐसा नहीं कर सकते कोई भी एक अब्जॉर्प्शन बेस ले लो। मान लो कि मशीनरी आर, तो मशीनरी आर ले तो लिया हम लोग ने, बट डू यू थिंक मशीनरी आर सबके लिए एक जैसे हो गए? बिकॉज दे आर डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैविंग डिफरेंट फीचर्स फॉर ईच अदर, having different types, having different things. That is why the world has different product, right? That, of course similar products बोले गए हैं, बट एग्जैक्ट सेम तो नहीं है प्रोडक्ट में। कहाँ भी मतलब मटेरियल हैंडलिंग में, मशीनरी में, असेंबली में कहाँ भी कॉस्ट ऊपर नीचे हो सकता है। तो अगर हम लोग पूरा एक ही कॉस्ट अज्यूम करेंगे, डोंट यू थिंक वो अनफेयर हो जाएगा इंडस्ट्री के लिए भी? कॉस्टिंग की पूरी प्रोसेस ही रॉन्ग हो जाएगी, कॉस्टिंग के कॉस्ट निकलने वाले वो सब ही रॉन्ग हो जाएंगे। Manufacturing products creates demand for the support activities. Costs are assigned to the products on the basis of product assumption of these activities. मतलब ये जो बोलते हैं कि जो भी कॉस्ट, जैसे हम लोगों ने डिस्कस किया पहले कि एक बिजनेस है, एक बिजनेस के 10 टाइप के अलग अलग एक्टिविटीज होते हैं। मान लो एक मटेरियल हैंडलिंग, मशीनरी, एक असेंबली, तो वैसे अलग अलग टाइप के कॉस्ट जो होते हैं वो उसमें हम लोग पहले उसके अलग अलग बेस निकालेंगे कि हम लोग मटेरियल हैंडलिंग में देयर आर हाउ मेनी मटेरियल रन, प्रोडक्शन अगर कॉस्ट है तो प्रोडक्शन रन्स कितने हैं, तो अलग अलग उसका हम लोग यूनिट्स निकालेंगे और उसके बाद उसकी पर यूनिट निकाल के देन वील कैलकुलेट यूजिंग एबीसी कॉस्टिंग। जस्ट आउटलाइन मतलब स्टेप्स है जो हम ऑब्वियसली पढ़ेंगे जब हम एक्चुअली प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करते हैं तभी। अभी सिर्फ देख लो कि कैसे कैसे कॉस्ट पूल्स और कॉस्ट ड्राइवर्स होते हैं। ऑर्डरिंग कॉस्ट में कैसे होता है, हैंडलिंग कस्टमर ऑर्डर्स, तो उसके कैसे कॉस्ट ड्राइवर्स, उसका बेस क्या लेंगे हम लोग? हमारे पास हैंडलिंग कॉस्ट ऑर्डर्स इतने तो है ही, उसका बेस क्या लेंगे? तो द नंबर ऑफ ऑर्डर्स, व्हाट टू डिवाइड इज बजटेड ओवरहेड अपॉन बजटेड
आर्स, वो हमारा बेसिक फॉर्मूला जब यूज करते आ रहे हैं ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, वही सेम यहाँ पे अप्लाई होगा। यहाँ पे सिर्फ कॉस्ट पूल, मतलब जो कॉस्ट हम लोग ने पहले लिया हुआ था वो बजटेड ओवरहेड्स की जगह पे हम लोग कॉस्ट पूल लेंगे डिवाइडेड बाय कॉस्ट ड्राइवर्स। दैट्स ऑल यू हैव टू डू, नथिंग एल्स। मटेरियल्स हैंडलिंग कॉस्ट, दैट इज number of production runs ये हो सकता है, it can be different cost driver which is given in the question. Machine setup cost, number of machine setups. Machine operating cost, number of machine hours. Production schedule cost, number of production runs. Dispatching cost, number of orders dispatched. So these are just cost pools and cost drivers which is need to be considered. A cost driver is a factor which has most influence on the cost of activity. ऑब्वियसली अगर ये देखेंगे तो हमको समझ में नहीं आएगा कि इसका कॉस्ट क्या रहेगा। नंबर ऑफ ऑर्डर्स मतलब क्या रहेगा, ऑर्डरिंग कॉस्ट हो सकता है, तो वही होता है हैंडलिंग कस्टमर ऑर्डर्स। अगर हम मशीन सेटअप देखेंगे तो क्या आएगा, नंबर ऑफ मशीन सेटअप कॉस्ट। तो ये बोल रहा है कि द लाइन सेज दैट अ फैक्टर व्हिच हैज मोस्ट इन्फ्लुएंस ऑन द कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। ये कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी पे हमको समझ में कैसे कैसे कॉस्ट लिए गए हैं। हालांकि आपको एग्जाम में तो दोनों भी दिया जाएगा, एंड मोस्टली यू विल हैव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आल्सो, एंड यू मे हैव अ लिटिल बिट नो like theoretical theoretical questions on cost drivers are influenced by what, or anything, you know, just for 2 marks, of course. Sorry. We can just read this questions very easy. Let's read it once. Which of the following definition best describes a cost driver? मतलब नीचे वाले में से कौन सा बेस्ट डिस्क्राइब करता है कॉस्ट ड्राइवर को। ड्राइवर मतलब बेस, जैसे हमने माना गया कॉस्ट बे, मतलब जो भी कॉस्ट रहता है उसका बेस कैसे क्या अज्यूम करेंगे। एंड एक्टिविटी विच कॉज एन इंक्रीज इन कॉस्ट, हम इंक्रीज इन कॉस्ट तो कहा होता है, तो वो तो कैंसिल हो जाएगा। कलेक्शन ऑफ कॉस्ट एसोसिएटेड विद अ पर्टिकुलर एक्टिविटी, कोई भी एक कलेक्शन ऑफ कॉस्ट हो तो बराबर है, बट एसोसिएटेड विद पर्टिकुलर एक्टिविटी, डोंट यू थिंक वो एसोसिएट करता है, मतलब इट्स नॉट अ परफेक्ट। हाँ, हालांकि थोड़ा बहुत सिमिलर है बट परफेक्ट नहीं है। अ कॉस्ट दैट वैरीज विद प्रोडक्शन वॉल्यूम्स, वो तो मार्जिनल कॉस्ट हो जाता है, तो वो भी रॉन्ग है। एनी फैक्टर विच कॉजेज अ चेंज इन कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कोई भी ऐसा फैक्टर विच कॉजेज अ चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी। अगर हम नंबर ऑफ मशीन आवर्स लेंगे और नंबर ऑफ प्रोडक्शन रन्स लेंगे तो दोनों अलग रहेगा। तो एनी एक्टिविटी विच कॉजेज अ चेंज इन अ कॉस्ट ऑफ एक्टिविटी, कोई भी अलग अलग एक्टिविटी ऑब्वियसली दोनों अलग ही रहेंगे। So this is little bit, you know, perfect than the B1. We found that B and D, B और D में से किसी भी confusion होगा, तो what you have to see is B और D में से कौन सा perfect है। B is partly perfect, D is totally perfect. Yeah, you will have many confusions in MCQs where you have to see, you have to compare कि इन दोनों में से perfect कौन सा है, because MCQs में हर बार partly right और partly correct questions भी पूछे जाते हैं। You have to choose the perfect of all. We proceed further. Absorption costing versus ABC. तो यहाँ पे एक सम सॉल्व करें ताकि मुझे समझ में आएगा क्या कैसे करना है। ठीक है, सपोज द कोपलेन मैन्युफैक्चरर्स 4 प्रोडक्ट्स W X Y Z, output cost data for the period just ended are as follows. W की, Y की, X Y Z तीनों के आउटपुट यूनिट्स, प्रोडक्शन रन्स, मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर आवर्स, मशीन आवर्स पर यूनिट दिए हुए और उसके अलग अलग ओवरहेड्स भी दिए हुए। और हमको पूछा गया कि प्रिपेयर यूनिट कॉस्ट फॉर ईच प्रोडक्ट यूजिंग कन्वेंशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग एंड एबीसी। Assume that in a traditional absorption costing system, overheads are absorbed at a direct labor hour rate. पहले हम सिंपली चीज कर देते हैं, अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग करके रख देते हैं। क्या करना है वो तो बहुत ही इजी है, यहाँ पे कॉस्ट तो दिया हुआ है। एक मिनट, यहाँ पे कॉस्ट दिया हुआ है, इसको सिर्फ ऐड नीचे सिर्फ डिवाइड कर देना है। एक मिनट, जस्ट अ मिनट।
यहाँ पे दिया हुआ है कॉस्ट, उसको डिवाइड करना है किससे, नीचे दिया हुआ है उससे किससे डिवाइड करना है अपने को, 38 को डिवाइड करना है अपने को 440 आवर्स। नाउ वेयर डज द आवर्स कम फ्रॉम? यहाँ पे आवर्स कैसे आते हैं? एनी आइडिया, एनी रफ गेसेस कहाँ से आते हैं आइडियाज? यहाँ पे we have already calculated the cost are already given. So what are we assuming, as we've already been assumed कि यहाँ पे बेस रहेगा डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीनरी आवर्स का। तो ऊपर जाके देखेंगे कि डायरेक्ट लेबर आवर्स और मशीनरी आवर्स का क्या कैसे बनता है। मशीनरी आवर्स का देखेंगे 1 into output that is 10, 3 into 10 that gives you 30, 1 into 100, 1 into 100 ये जो 1 है, ये 1 into 100, ये जो 3 है that into 100, that gives you 10 plus 30 plus 100 plus 300, that gives you 440. 440 is your मशीनरी पर आर। हम लोग यहाँ पे अज्यूम करते हैं कि हम लोग मशीनरी आर पर यूनिट लेंगे, हालांकि यहाँ पे दो में से कोई भी एक लेंगे तो एक ही आंसर रहेगा, बट यहाँ पे वी आर अज्यूमिंग दैट वील टेक मशीनरी पर आर। वी आई मीन यहाँ पे दोनों में से कोई भी अगर एक भी ले तो आंसर सेम ही आएगा, बट यहाँ पे अज्यूम करेंगे हम लोग मशीनरी आर लेंगे हम लोग। क्लियर है? हम लोग को अब्जॉर्प्शन रेट तो मिल गया है, उससे फिर अब्जॉर्प्शन रेट मिलने के बाद हम सिर्फ मल्टीप्लाई करेंगे उसको WXYZ से। absorption rate we have to multiply into WXY, जो मटी ओवरहेड्स यहाँ पे दिए है उससे। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट 5 दिया हुआ है इधर, ओवरहेड 700 जिससे हमको मिलता है, देन इट्स 2100, 7000। ठीक है, हाउ डू वी गेट दैट? हियर वी हैव गॉट द अब्जॉर्प्शन डायरेक्ट पर लेबर आर एज, अच्छा here I'm so sorry, here they have assumed as direct labor hours, it's already written, okay, that's my mistake। यहाँ पे ऑलरेडी लिखा गया है कि डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट है, तो हम लोग डायरेक्ट लेबर लेंगे यहाँ पे इंस्टेड ऑफ मशीनरी पर आवर पर यूनिट, सॉरी। तो यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट लेबर लेंगे, डायरेक्ट लेबर लेने के बाद जो 70 पर डायरेक्ट लेबर है वो हम अप्लाई करेंगे। 70 into 10 gives 700, 70 into 10 again gives yeah, it goes product wise, 70 into 10 into 1, 70 into 10 into 3, 70 into यहाँ पे आउटपुट्स और डायरेक्ट लेबर दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 70 हमारा अब्जॉर्प्शन रेट है, into 10 into 1 gives you 700, 70 into 3 gives you 21, to 10 into 10 gives you 2100, that goes on, and here the answer comes as 700, 2100, 7000 and 21000। इन सबको टोटल करेंगे तो मिलता है 950, 3050, 950 and 3850। here we get the answer as 44000। इन सबको डिवाइड करेंगे इंडिविजुअल यूनिट प्रोड्यूस से, and then we get the answer as 95, 304, 95 and 304। ये हमारा इंडिविजुअल जो आंसर है, जो अब्जॉर्प्शन क्वेश्चन हम यूजुअली करते आ रहे हैं कि एक बेस लो, एक बेस यूजुअली ये दो में से एक ही रहता है, वो बेस को मल्टीप्लाई करो एक बार बजटेड ओवरहेड्स अपन बजटेड आज से हमको अब्जॉर्प्शन रेट मिल गया, अब्जॉर्प्शन रेट को मल्टीप्लाई करो जो ओवरहेड्स आते हैं उससे, जो ओवरहेड्स बेस लिया है हम लोग को उसको मल्टीप्लाई करना है, गेट द आंसर, गेट द कॉस्ट पर यूनिट ऑफ द ईच प्रोडक्ट व्हिच इज प्रोड्यूस्ड इन द इंडस्ट्री, राइट? ये तभी एप्लीकेबल जब ये सब प्रोडक्ट्स एक ही इंडस्ट्री के हैं। व्हाट इफ अगर WXYZ सब अलग अलग इंडस्ट्री से और एक ही इंसान चलाता है, मतलब एक ही इंसान एक ही बिजनेसमैन चलाते हैं, डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्टली मतलब कोई फर्क नहीं आएगा, जो फर्क आएगा वो आएगा ओवरहेड्स में। तो ओवरहेड्स में क्या फर्क आएगा? पहले जो भी कॉस्ट ऊपर दिए हुए हैं, देयर आर डिफरेंट कॉस्ट गिवन टू अस इन अ segregated manner। ओवरहेड कॉस्ट अलग से दिए हुए हैं, like short run variable cost, setup cost, expediting and scheduling cost, material handling cost, ये सब हमको अलग अलग से भी सेग्रीगेशन दिया हुआ है। हम लोग ने पहले के इसमें क्या किया था, सबको ऐसे एक साथ ले लिया
38,800 को डिवाइड कर लिया 440 से, यहाँ पे ऐसे कुछ नहीं होगा। यहाँ पे हमको शॉर्ट रन वेरिएबल कॉस्ट है उसको अलग हेड से डिवाइड करना पड़ेगा, सेटअप कॉस्ट उसकी अलग हेड से डिवाइड करना पड़ेगा, एक्सपेंडिंग एंड शेयर कॉस्ट उसके अलग हेड। हेड का मतलब क्या है, यहाँ पे हेड का मतलब है कॉस्ट ड्राइवर्स, मतलब ये जो जितने भी है हमारे कॉस्ट पूल है, इन सबको मिला के ही हमको एक कॉस्ट मिलता है जो है 30,800। जो ऊपर के जो कॉस्ट उसको बोलते हैं कॉस्ट पूल्स, और जो हम बेस लेंगे उसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर्स। ठीक है, देखते हैं अभी कैसे बनता है। 3800 डिवाइड बाय 440, तो मशीनरी आज से ही मल्टीप्लाई करेंगे। 10,920 को प्रोडक्शन रन्स है जो ऊपर दिए हुए हैं 14। व्हाट आर दीज प्रोडक्शन रन्स? तो प्रोडक्शन रन्स मतलब 2 जो यहाँ पे दिए हुए हैं, ये वाले हैं प्रोडक्शन रन्स, ये जो दिए वो प्रोडक्शन रन्स हम लोग ने लिए हुए। 2 + 2 + 5 + 5 14 यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग। इंडिविजुअल हम लोग ने प्रोडक्शन रन से डिवाइड कर, वी गॉट द पर यूनिट मशीनरी आर पर प्रोडक्शन रन ऑफ सेकेंड प्रोडक्शन रन 650 550 इंडिविजुअली हम लोग ने डिवाइड कर, वी गॉट द आंसर राइट। अभी इसको कैसे प्रोसीड करना है, ये जो 7 780 650 550 हमको पर यूनिट मिला है वो हमको डिवाइड करना है यहाँ पे W का जो मटेरियल प्रोडक्शन रन है, W का 2 है, so that is number of production runs in a period, right? 2 7 into 10 into 2 gives you how much? Excuse me, so sorry. हम लोग वो सम देख रहे थे राइट, एक बार स्क्रीन शेयर स्टार्ट कर लेते हैं। We were dealing into these types of we were just a minute. We were dealing into the types of cost which we had to calculate, right? So हम लोगों ने कॉस्ट के वर्किंग्स तक तो पहुंच गए थे। उसके बाद आई सेड 7 पर मशीनरी, उसके बाद मल्टीप्लाई करना है 7 into 1 into 10। Why 1? This machine as per unit, getting it? यहाँ पे जो 7 मिला है into 1 into 10, same that is for W, same if you do it for X, Y, Z. 7 into 3 into 10, 7 into 1 into 100, 7 to 3 into 100, that's for X, Z. Same for 780, 650 and 550. That is 780 is production per run. Just 780 into 2. This is 1560. 780 into again 2 for different one. 55, that is again 1560, 33900, 3900. That's how it goes. You have to calculate. Then again it is for schedule cost, same. Again it is for material handling cost, and here we get the exact total: 4280, 5120, 13100, 21500. This we have to multiply, we have to divide by output units, and there we get the exact overhead per unit according to ABC costing. Now can we compare both? Like how does it vary? For Y, for W, it is 95 cost per unit. And same thing for ABC, it is 428. Just a minute.
here we reached till here. Here we were summarizing this like it's WXYZ. It's 95 and 428. Can you see the difference between these two? It is a extreme more difference. Tremendous difference. It's 333 difference per unit. Can you imagine the difference? इतने कॉस्ट से ज्यादा बढ़ गया. हम लोग समझ रहे थे कि सिर्फ 95 पर कॉस्ट, बट वो तो कॉस्ट एक्चुअली 428 का है. अगर हम डाइवर्सिफिकेशन करते हैं तो की बात है. नहीं भी करते हैं तो कर सकते हैं, बट दिस ऑलवेज रिजल्ट इनटू परफेक्ट कॉस्टिंग मेथड. Same for 305 and 512. Again, a vast difference of 207. 95 and 131, 36 rupees difference. 305 and 215, that's 90 rupees. Last ला जो है उसमें Z का कॉस्ट एक्चुअली ज्यादा आ रहा है अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग प्लस कन्वेंशन कॉस्टिंग, और एबीसी में कम आ रहे हैं. To clear your doubts, again, convention, absorption and tradition, three are the same. Convention मतलब जो पुरानी हम लोग यूज करते थे वो वाली बात. आगे बढ़ते हैं. These figures might suggest that the traditional volume based absorption system is flawed because low volume production Y and X are not being charged a fair value, fair share of the costs of overhead support activities. ऑब्वियसली अगर हम W और X की बात करेंगे तो जहाँ पे 95 और 305 कन्वेंशन कॉस्टिंग में कॉस्ट रेट लगाया गया है या फिर हम लोग ने निकाला है, वो अनफेयर तरीके से लगाया हुआ है. वही चीज हम लोग एबीसी में देखेंगे तो इट इज 428 एंड 512. कितना बड़ा डिफरेंस है. हालांकि वाई और जेड में उतना डिफरेंस है जितना हम लोग को डब्ल्यू और एक्स में दिखाई दे रहा है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. तो काफी अनफेयर शेयर दिखा गया है कि एक को इतना कम आ रहा है, वही चीज एबीसी कॉस्टिंग में दिस सो मच डिफरेंस. More specifically, traditional absorption may be unsatisfactory for two main reasons. It underallocates overhead cost to low volume products and overallocates overhead to high volume products. It underallocates overhead cost to smaller sized products and overallocates overheads to larger products. ABC addresses these problems and arguably produces a more realistic and satisfactory cost, as we just saw. लोगों को कितना बड़ा difference दिखाई दे दोनों में. Cost drivers have already discussed. You can just read it once. If you have any doubt, you can definitely let me know. Again, one more question based on it. A company manufactures two products, L and M, using the same equipment and similar processes. And extract of the production data for these products in one period is shown below. Quantity produced, direct labor hour per unit, machinery hour per unit, setup in the period, order handled in the period. And these are the overhead costs, these are the cost pools, if you remember, I told you, right? Related to machinery activity, related to production run setup, and relating to handling of orders. Those who are watching me online, they can definitely try this on their own. And those are offline, definitely we'll do it here. Calculate the production overheads to be absorbed by 1 unit of each of the products using the following costing methods. It's by additional, which if you take using direct labor, दिया हुआ है, हमको कुछ assumption नहीं लेना है. An activity based costing approach using a suitable, मतलब आपके हिसाब से लो. Do you think it's आपके हिसाब से? It's not आपके हिसाब से. It is suitable cost drivers to trace costing to product. Cost drivers मतलब base. अगर हम ले रहे हैं मशीनरी एक्टिविटी तो कौन सा सुटेबल होगा, उसमें होगा मशीनरी आर. अगर हम ले रहे हैं प्रोडक्शन रन सेटअप, वो कॉस्ट है, तो कौन सा लेंगे, प्रोडक्शन रन लेंगे, राइट, डेफिनेटली, तो वो होगा हमारा बेस. आई एम श्योर फर्स्ट ट्रेडिशनल कॉस्टिंग तो काफी इजी जाएगा. प्रोडक्ट जो है एल एन एम 5000 यूनिट्स इंटू 1, 7000 इंटू 5 इंटू 1, हमको बोला गया है कि वो डायरेक्ट लेबर आर पर यूनिट है. इंटू 2 अगेन हमको बोला गया है तो हमारा डायरेक्ट लेबर आर्स निकल जाएगा. एज इट इज आर फॉर्मूला, बजटेड आर्स अपॉन बजटेड यूनिट्स और बजटेड आर्स, बजटेड कॉस्ट अपॉन बजटेड आर्स, वो हमारा मेन फॉर्मूला है. आई रिपीट, आई मेड अ मिस्टेक. इट इज बजटेड कॉस्ट, जो भी कॉस्ट आता है बजटेड कॉस्ट अपॉन द सुटेबल
बेस, यहाँ पे हमारा डायरेक्ट लेबर आज है तो यहाँ पे डायरेक्ट लेबर आज होगा, ठीक है। इट्स $285,000 divided by $19,000, that gives you $15 per hour. You $15 have to multiply into the respective hours, you'll get per unit answer. This 15 per unit and 30 per unit we've already done in the previous session also. We've done in F2 also in depth, and we have already a little bit revised in the previous sum also. Okay, we move further to ABC approach. ABC approach here से it's product L and product M. Product L again 5,700 तो दिया हुआ है, into 3 into 1 again जो भी है। यहाँ पे उन्होंने मशीनरी आर पर यूनिट लिया है, क्यों? बिकॉज हमारा फर्स्ट बेच अगर हम देखेंगे, पहला वाला जो कॉस्ट पूल दिया हुआ है हम लोग को, वो पहला वाला किस पे डिपेंड है? रिलेटिंग टू मशीन एक्टिविटी। मशीन एक्टिविटी में तो ऑब्वियसली द बेस्ट बेस इज मशीनरी आर। मशीनरी आर का हमको टोटल पता होना चाहिए दोनों का, जितने भी प्रोडक्ट्स है उसका। यहाँ पे 2 है तो 2, अगर 5 रहेगा तो 5, 4 रहेगा तो 4। टोटल किया हम लोग ने 22,000 टोटल आया है हमारा। मशीन आर ड्राइविंग कॉस्ट जो हमारा टोटल है डिवाइडेड बाय द टोटल आवर्स, सेम फॉर ड्राइविंग कॉस्ट, सेम फॉर ओवर ऑर्डर ड्राइविंग कॉस्ट ऑल्सो। 50 सेटअप और 75 सेटअप आता कहाँ से? इट्स ऑलरेडी गिवन द क्वेश्चन। सेटअप 10 + 40, 15 + 16, ठीक है। उस तरीके से हमको मिलता है 50 सेटअप एंड 75 सेटअप। यहाँ पे मिलता है $400 पर सेटअप, $600 पर ऑर्डर। Here we are getting the absorption rate for each different activities जो हमारा मोटो है। फर्स्ट वाला 15,000 into 10, 10 into 400, 15 into 600। ये 15,000, 10, 15 आता कहाँ से? अगर हम एल के प्रोडक्ट क्वेश्चन में देखेंगे तो 15,000 आवर्स जो हम लोग ने ऊपर निकाले थे 5,000 to 3, here if you see it's 15,000 hours, वो आएगा नीचे into 10। Why 10? Because 10 निकाला हुआ है। 10 it's given the question, that is set up in the period into 400, 400 per setup। 15 into 600 gives you 9,000। ये हमारा प्रोडक्ट कॉस्ट टोटल आ गया 1,63,000। इसको डिवाइड करेंगे टोटल आउटपुट से, जो 5,000 है वो मिलता है हमका 32, मिलता है हमारा आंसर इज 32.60 पर डॉलर। कैन यू सी द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? हमारा ऊपर अगर हम 15 पर यूनिट अगर हमको अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग मिल रहा है, वही चीज हमको डबल करके 32.60 में पड़ती है एक्चुअली, if we follow the perfect method। Sorry, don't you think somewhere it's unfair to the industry also अगर हम costing methods wrong follow करते हैं तो? काफी हद तक it is very unfairness अगर हम absorption costing follow करते हैं। ऐसे भी नहीं कि हर जगह अगर स्मॉल भी है तो वी शुड फॉलो एबीसी कॉस्टिंग, बिकॉज ऐसे बोला जाता है कि सभी चीज के अगर बेनिफिट्स है तो डेफिनेटली उसके फ्लॉज भी है, उसके डिसएडवांटेजेस भी है, ठीक है। यहाँ पे हमारा खत्म होता है ये सम, जिसमें हमको एल प्रोडक्ट मैंने किया था, एम प्रोडक्ट आप एक बार ट्राई करना, वीडियो पॉज के एक बार ट्राई करना। सेम मेथड है, 7,000 to 10, अगेन 40 जो क्वेश्चन में दिया हुआ इंटू 400 जो मैं निकाला है ऊपर, 60 जो क्वेश्चन में दिया इंटू 600 जो निकाला है, वी गेट द आंसर डिवाइडेड बाय द आउटपुट एंड गेट 617.43 इज द आंसर। ठीक है। These figures suggest that with traditional absorption costing, product M absorbs an unfair amount of overhead cost using a direct labor hour absorption rate. If overhead costs are absorbed accordingly for each activity based on the cost drivers for the activity, the resulting costs are more fair. Don't you think so? We've already discussed this earlier. Merit and criticism of ABC. As I told you, अगर किसी चीज का अगर मेरिट्स है तो कोई इतना परफेक्ट जिसके डीमेरिट्स ना हो, उसके डीमेरिट्स होगे ही होगे। मेरिट्स तो बहुत सारे हैं और एक बार पढ़ के देखते हैं ताकि हमको समझ में आए एग्जैक्टली अगर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, क्योंकि उसको लिखना पड़ेगा तो अच्छे से उसको ड्राफ्ट भी करना पड़ेगा, और ये ऐसे
अनप्रोफेशनल एग्जाम नहीं है कि हम ऐसे ही ड्राफ्ट लिख देंगे. इट शुड बी इन अ परफेक्ट लैंग्वेज, द परफेक्ट words also. ABC has both advantages and disadvantages and tend to be more widely used by larger organizations. We directly start from the first point A. The complexity of the manufacturing has increased. Of course, सबको manufacturing sector में जाना होता है तो वो बढ़ गई है. With wider product ranges, as I told you, लोग एक ही इंडस्ट्री में नहीं जाते. There is diversification of business also. Shorter product life cycles and more complex production process. ABC recognizes this complexity with its multiple cost drivers. तो ये एबीसी वो बोल रहा है कि अब अगर हमको डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना है तो कॉम्प्लेक्स क्यों करना है उसको. अगर डाइवर्सिफिकेशन ज्यादा करना है तो कन्वेंशन कॉस्ट यूज करके उसको कॉम्प्लेक्स क्यों करना है. उससे अच्छा हम लोग एबीसी कॉस्ट यूज करते हैं और अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स यूज करते हैं ताकि हमको एग्जैक्ट रेट पता चल सके. In a more competitive environment, companies may be able to assess product profitability realistically. Obviously, if you saw the difference between both, it's a vast difference, which we need to be considered, which we should consider basically. ABC facilitates a good understanding of what drives overhead cost. In a modern manufacturing system, overhead functions include a lot of non-factory floor activities such as product designs, quality control, production planning, and customer services. ABC is concerned with all overhead costs, and so it can take management accounting beyond its traditional factory floor boundaries. ABC is concerned with all overhead costs. उसको हाईलाइट किया हुआ है. क्यों हाईलाइट किया? बिकॉज दिस इज द मेन वर्ड्स इन द फुल पॉइंट. एबीसी यहाँ पे वो बोल रहा है कि एबीसी ओवरहेड कॉस्ट को ज्यादातर सबको कंसिडर करता है, किसी एक को भी छोड़ता नहीं. अगर आपने देखा रहेगा तो अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में काफी सारी चीजें छूट जाती थी. अगर बहुत सारे एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज को मत कंसिडर करो, डायरेक्टली टोटल लो, कॉस्ट लो, उसका एक हेड लो, खत्म करो. यहाँ पे ऐसे नहीं होता है. यहाँ पे जितने भी एक्टिविटीज है उसको अलग अलग तरीके से अलग अलग कॉस्ट ड्राइवर्स लो, उसके कॉस्ट ड्राइवर्स को डिवाइड कर, कॉस्ट पूल को डिवाइड कर कॉस्ट ड्राइवर्स से, एंड गेट द आंसर. इट्स सो इन डेप्थ एनालिसिस. नो एबीसी डिसीजन मेकिंग. एबीसी के साथ डिसीजन मेकिंग कैसे करेंगे, यहाँ पे अलग अलग तरीके से उन्होंने दिया कि अगर काफी कम वॉल्यूम है तो क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, बैच लेवल है क्या क्या कंसिडर कर सकते हैं, प्रोडक्ट लेवल है तो भी क्या कंसिडर कर सकते हैं. उसके बाद के जो जितने भी है, लेट्स गो थ्रू इट वंस. Many of ABC supporters claim that it can assist with decision making in a number of ways. It provides accurate, reliable cost information. It establishes a long-run production cost, a long-run product cost. It provides cost data which may use to evaluate different ways of delivering business. इसका मेन मतलब ये होता है कि हम लोग ने पहले डिस्कस किया कि बहुत रिलायबल भी है, एक्यूरेट है, और ये ऐसी चीज नहीं कि जो एक साल चले. अगर हम लोग लॉन्ग टर्म या लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहते हैं तो डेफिनेटली ये काम में भी आएगा. अगर ये साल में अगर हम लोग निकाला एबीसी कॉस्टिंग से तो नेक्स्ट ईयर वी कैन रिफर दिस एबीसी कॉस्टिंग ये साल के लिए. नेक्स्ट ईयर का जो हम लोग बनाएंगे तो ये साल का हम लोग बेस लेके बनाएंगे उसको. जो भी कॉस्ट डेटा है उसको उसको अलग अलग तरीके से इवेट करने में बहुत काम में आएगा. और इससे हमको बहुत टाइम कैसे होता है कि अलग अलग बिजनेस को अगर कॉस्ट समझ में आती है उनको, तो दे आर प्लानिंग टू एक्सपैंड मोर. तो कैसे एक्सपैंड कर सकते हैं, हमको मालूम पड़े कि ये इतनी कॉस्ट है, हम लोग इसकी इतना मार्जिन बढ़ा सकते हैं, तभी जाके एक बिजनेसमैन इवेट कर सकता है कि कितना प्रॉफिट बढ़ाना है, कैसे उसको एक्सपैंड करना है, कौन से डायरेक्शन में उसको एक्सपैंड करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. पर्टिकुलरली suited to the particularly suited to the following types of decisions: pricing, where selling prices are derived by adding a profit mark to cost; promoting or discontinuing products or parts of business, since ABCA may help management to identify activity costs that may be either incurred or saved; developing new products or new ways to a business, because ABC focuses attention to support activities, of course, that would be required to new product or business procedure. अलग अलग एक्टिविटीज को अगर फोकस करेगा तो नए नए प्रोडक्ट्स को समझ में तो आएगा ना कि ये प्रोडक्ट में हमारी ये गलती हुई है. अगर ओवरऑल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग की तरह समझ में ही नहीं है कहाँ पे फ्लॉज है, कहाँ पे गलती हो रही है हमारी,
तो ये एक एडवांटेज है जो डिसीजन मेकिंग में काफी काम में आएगा। बहुत जन की ये गलती होती है कि एबीसी कॉस्टिंग एक वेरिएबल कॉस्ट है। डू यू थिंक एबीसी कॉस्टिंग वेरिएबल कॉस्ट है? ऑफ कोर्स नॉट, इट इज अ मेथड जो हमको परफेक्ट इन डेप्थ एनालिसिस देता है कॉस्टिंग के लिए। तो ऑफ कोर्स वेरिएबल कॉस्ट नहीं, वही नीचे नोट दिया हुआ है। हाउएवर दैट एबीसी कॉस्टिंग इज नॉट अ वेरिएबल कॉस्ट। एबीसी इज अ फॉर्म ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग दैट सीक्स टू charge overheads to products on a more fair basis than traditional absorption costing. An ABC cost is therefore not a relevant cost for decision making purposes. ये इसको हाईलाइट करो। ये एक बहुत सा बेसिक टॉपिक जो F2 में हमने पढ़ा हैगा, जहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट है, रेलेवेंट कॉस्टिंग, संक कॉस्टिंग, देन इररेलेवेंट कॉस्टिंग। तो इसमें रेलेवेंट कॉस्टिंग के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, F2 में भी आते हैं, कई बार F5 में भी आते हैं, आपकी नॉलेज टेस्ट करने के लिए। उसको है ना इधर हाईलाइट करके रखो। एंड एबीसी कॉस्टिंग इज देयरफॉर नॉट अ रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। रेलेवेंट कॉस्ट नहीं है वो। ABC attempts related to incidence of cost to a level of activities undertaken, a hierarchy of activities has been suggested. इसको सिर्फ पढ़ लेना, एक बार पढ़ लेना, समझना, मतलब बाकी इसमें कुछ इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट ये टेबल में नहीं है। We come to criticism, that is disadvantages of ABC costing. It has been suggested by critics that ABC has some weaknesses. Cost apportionment may still be required at cost pooling stage for shared items of cost such as rent, rate, and building depreciation. Apportionment can be arbitrary way of sharing cost. यहाँ पे वो बोल रहा है जब हम लोग कॉस्ट अपॉर्शन, जब हम लोग कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो स्टेज पे हमको कॉस्ट पूल, मतलब जो भी हम लोग ने, जो जैसे हम लोग ने क्वेश्चंस किए हैं, हमको टोटल पता है। कभी कभार ऐसे होता है कि हमको टोटल पता होता है और उसके जो कॉस्ट सेग्रीगेशन है वो पता नहीं होते हैं। अगर हमको वो पता नहीं है तो हम लोग एबीसी कॉस्टिंग अप्लाई कर ही नहीं सकते हैं। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट। कभी कभार ऐसे होता है हमको सिर्फ ओवरऑल कॉस्ट पता है, उसका सेग्रीगेशन पता नहीं है। A single cost drivers may not explain the cost behavior of all its items in a cost pool. An activity may have two or more cost drivers. Definitely. जैसे बहुत सारे स्टूडेंट्स एक क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, मैम हमको तो लगता है मशीनरी कॉस्ट की जगह पे डायरेक्ट लेबलास भी बैठ सकते, तो उस टाइम पे करेंगे तो करेंगे क्या? एग्जाम में यूजली अगर ऐसा आएगा तो दैट केस देयर विल बी अ नोट अपेंडेड कि आपको यही यूज करना है, यही यूज करना है। अगर नहीं यूज करना है आप, यू हैव टू प्रूडेंटली यूज इट प्रॉपर्ली। Unless costs are driven by an activity that is measurable in a quantitative terms, cost drivers cannot be used. What drives the cost of annual external audit? For example, B1, there must be a reason for using a system of ABC. ABC must provide meaningful product cost or extra information that management will use. If management is not using ABC information for any practical purpose, a traditional absorption system would be more simple to operate and just as good. सी वाला पॉइंट तो ऐसे बोल रहा है कि अगर कॉस्ट कहाँ से आता है वही नहीं समझ रहा है तो मतलब ही नहीं ये पूरा यूज करने के लिए। Unless costs are driven by an activity by measurable and quantitative terms. कभी कभार ऐसा होता है कॉस्ट पूल तो मिल जाता है बट कॉस्ट ड्राइवर नहीं मिलता है। कभी कभार ऐसा होता है कॉस्ट ड्राइवर मिलता है बट कॉस्ट पूल नहीं मिलता है। तो वो सी वाला पॉइंट है। डी वाला पॉइंट ऐसा है, बहुत बड़ी फर्म है तो समझ में आता है कि एबीसी कॉस्टिंग यूज करो, खर्चे भी बहुत होते हैं एबीसी कॉस्टिंग। इट इज मोर कॉस्टली, द सेटअप्स आर मोर कॉस्टली। अगर वो बड़ी फर्म या बड़ी कंपनी ऑर्गेनाइजेशन है तो वो अफोर्ड कर सकते हैं। हालांकि छोटी फर्म है, छोटा बिजनेस है, एक्सपैंड नहीं हुआ है, इट इज मोस्ट रिकमेंडेड टू यूज ट्रेडिशनल अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। बस वहां पे अगर एक ही प्रोडक्ट है तो जरूरत नहीं है एबीसी कॉस्ट में ज्यादा इन्वेस्टमेंट करने की। The cost of implementing and maintaining an ABC system can exceed the benefit of improved accuracy in product cost. Implementing ABC is often problematic due to problems with understanding activities and their cost. Definitely, as I told you, कि वो difficult तो है, but at the same time, it's very accuracy also. It's pretty accurate. It's pretty perfect. ABC's absorption costing system. Absorption costing has only limited value for management accounting purpose. Last point सबको ऐसे नो skeptic condition में लाता होगा कि आप बोल रहे absorption costing अलग है, वापस बोल रहे हो सेम है, तो हम समझे क्या? ABC is an absorption costing system.
हम लोग ने पहले पढ़ा था, चीज तो सेम ही है, सिर्फ हम अलग अलग उसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं। है तो ऑब्जर्वेशन कॉस्ट सिस्टम है, उसको इन डेप्थ पढ़ रहे हैं, अलग अलग एक्टिविटीज वाइज पढ़ रहे हैं। तो अगर एक्टिविटी वाइज पढ़े उसको अलग से उसको सिस्टम ही बना दिए एबीसी कॉस्टिंग, इंस्टेड ऑफ कॉलिंग एज इट इज एन अनदर टाइप ऑफ अब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग, व्हाई नॉट कॉल्ड एज एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, बिकॉज वो एक्टिविटी वाइज ही उसका कैलकुलेशन किया जाता है, इसलिए उसको बोलते हैं एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। होपफुली सब क्लियर हुआ रहेगा, यहाँ पे हमारा एंड होता है ये चैप्टर। एंड होपफुली सबको समझ में आएगा, कुछ डाउट रहेगा डेफिनेटली यू कैन कॉल मी, टेक्स्ट मी। ओके, थैंक यू।